pretend that we know, that we know. Hey guys, कैसे हो सब लोग? आ चुके हैं हम, थोड़ा जल्दी आ चुके हैं आज, ठीक है। तो हम लोग फिर से रेक्सन और हम लोग फिर से खेलने वाले हैं हम लोग पुराना वाला गेम। भाई रात में थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं हम लोग। वैसे 11:30 से हम लोगों का स्ट्रीम स्टार्ट होता था, लेकिन आज थोड़ा जल्दी आ गए। तो तुम लोग भी जल्दी आ जाओ, जो जो जल्दी जल्दी देख रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ और करते हैं कुछ। आज देखते हैं क्या किया जा सकता है। एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं आज देखते हैं। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जो जो ज्वाइन कर रहे हो जल्दी से ज्वाइन करो। हाँ, तब तक मैं कुछ अपने छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। जरा सा रुको, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना गेम। भैया जी कहाँ गए? आज हम लोगों का डे 12 है वैसे। तो आज 12 डे है, तो चलो देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। उधर अभी भी सेम ही आ रहा है। इसको मैंने फिक्स नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ फिक्स करने का। ठीक है, चलो चलते हैं, अभी करते हैं और देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है आज। रुक जाओ यार, गर्मी हो रहा है, मैं थोड़ा खिड़की खोल। अब तक शुरू करते हैं गेम। बताओ क्या क्या सीन चल रहा है सबका, फिर हम लोग गेम स्टार्ट करने वाले हैं। आज बहुत कुछ करने वाले हैं वैसे, बहुत मतलब हम लोगों का क्लास अटेंड करने वाले हैं, बहुत सब कुछ, मतलब लाइक कुछ नए स्किल सीखने वाले हैं। ऐसे तुम लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम यार एक कर्स सीखा था, बट हाँ वो अच्छा था, थोड़ा डार्क मैजिक टाइप का कुछ सीखा था, क्रूशो सीखा था भाई। ऐसा वो बहुत क्रेजी चीज़ था, मैं लास्ट टाइम बहुत खतरनाक वाला सीन हो गया था वहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं आज का क्या क्या सीन है और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग आज। तो प्रोफेसर ने एक टास्क दिया है बीस्ट क्लास अटेंड करने का, और डीक के साथ बात करना है, क्योंकि हम लोग जो हमारे जो मैजिकल मतलब बीस्ट है उनको हम लोग मतलब ब्रीडिंग करवाने वाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो बहुत कुछ होगा आज। और पॉपी जो हमारा पॉपी के साथ भी हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो कुछ करने वाले हैं, गलत मत समझना, कुछ और भी होगा मिशन के लिए। यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं होता वैसे। चलो चलते हैं। तो पहले हम लोग बीस्ट क्लास अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे जाना, इतना मैं भाग क्यों रहा हूँ? रुक जाओ, यहाँ से ही जा सकता हूँ वैसे। जल्दी ट्रैवल इजीली हो जाता है, तो भाई हम लोग इतना घूम के क्यों जाए, राइट? हाँ, तो चलो देखते हैं। तो वैसे हाँ, वेदर चेंज हो चुका है वहाँ पे अभी। जो शॉर्ट से देख रहे हो जल्दी से मेन स्ट्रीम पे जाओ।
Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. ये I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. वैसे Nice and steady wand अरे movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. ठीक है, देखते हैं कितना कर सकते हैं। मुझे यूज करना है, मुझे एक बार देखना था। वैसे भी मुझे ये Well done. अनलॉक करना ही Now, पड़ेगा। let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. अच्छा जी, पंपकिन पे करना है। चलो देखते हैं। Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. अच्छा, ठीक है, देखेंगे। चलो, अभी हम लोगों को एक बार शायद से मेन जगह पे भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग सीखेंगे आज, वो भी जानवरों का। वेट, मेरे पास क्या कुछ वहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को When you have a moment, then please come and talk तो to यार Deek. मैं ना कभी-कभी थोड़ा चीज़ें मुझे रिवील करना भी है, तो बाकी चीज़ों को एक बार हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे। रुको, पहले इनसे बात कर लेते हैं। Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. Okay. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing इसलिए मैं thestrals, पकड़ रहा था as लास्ट they're दो at great दिनों से, risk जब from स्क्रीन poachers. पे आ रहा था, तुम लोगों ने Noble देखा creatures, होगा, जो but मेरे the को देखते relationship हैं, with death वो gives लोग them a bad देखा होंगे कि reputation. मैं एक They're लड़का prized पकड़ by रहा, एक poachers for मेल their पकड़ रहा tail था, एक hairs. फीमेल पकड़ रहा I've था। seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. वहाँ तो Once जाना ही you've होगा। rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. चलो चलते हैं, फिर पहले देख के आते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। तो हॉक्समीड में हाँ इधर ही जाना होगा। नहीं यार, हर वक्त ये यूज नहीं करना है मेरे को, मजा नहीं आता। हर वक्त यूज करूंगा तो मजा नहीं आएगा। फिर भी ठीक है। हर वक्त यूज कर लेंगे तो भाई उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा, मतलब मजा नहीं आएगा गेम का। गेम देखने में भी अच्छा तब लगता नहीं है कि भाई ये तो लौंडा हर वक्त यूज कर रहा है, तो नॉर्मली खेलो। अभी भी बहुत कुछ है गेम में करने के लिए, लेकिन वैसे अभी पैसे तो हैं, किया जा सकता है। यहाँ से ही चले जाएंगे। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, जो नए देख रहे हो, हॉक्समीड पे झाड़ू अलाउ नहीं करते, मतलब तुम झाड़ू लेके घुस नहीं सकते। देखना जब ये छोटे वाला जब मैप दिखेगा ना, मिनी मैप पे तुम देखना एक रेड कलर का पूरा वो आ जाएगा,
तो तुम घुस नहीं सकते हाउस में। देखा आ गया। Does it get any more cozy than Hogsmeade? Can't imagine how different it was. Ah, it's always nice to जो see अभी you. देख Revelio. मैं क्यों बोलता हूँ बार-बार आपको? चलो देखते हैं। तो ये वाला ब्रीडिंग पेन्स, हाँ यही खरीदना है। $1000। Now we एक can चीज conjure का a breeding $1000। pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. ठीक है, देख लेते हैं। Just because you know. इधर तो नहीं लेने देंगे। जो नए ज्वाइन कर रहे हो जल्दी से लाइक करो यार। कितना सुंदर व्यू है, देख रहे हो? सोच रहा हूँ गाइस एक बार आरटी ऑन करके खेलें, क्या लगता है? जो नए ज्वाइन करो जल्दी से लाइक करना यार। तो अभी उतर सकते हैं यहाँ पे? हाँ जरूर उतर। चलो I can't believe. चलो फिर हम लोग देखते हैं आज का ब्रीडिंग क्या से होता है। Galleons and a historian's uniform. गिरा हुआ औरत। चलो हाँ हम ले आए। I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent! Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. कुछ भी ज्वाइन कर रहा है भाई, रूम में कुछ भी चल रहा है। चलो देखते हैं। Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. देखते हैं अभी तो कैसे क्या करना है, देखना है मुझे। चलो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। Should conjure the pen and the breeding pair district. हाय हाय हाय, इतना अंधेरा? अब ये तो शायद H पे ओके, select the beast. तो मुझे तो अभी के लिए 2 चाहिए। ये तो दोनों ही फीमेल्स हैं। चलो इन दोनों का ही पहले करके देखते हैं, फिर जो होगा देखते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है? Conjure the pen.
Bombarder! लॉल में मार दिया मैंने। पीछे आजा दोस्त, सॉरी दोस्त यार, मैंने गलती से मार दिया तेरे को। खाना खा ले। क्या हो रहा है बे? करने कैसे? अभी के लिए चलो देखते हैं। H दबाओ। Professor Howard will never believe this. हाँ, अभी शायद यहाँ से इंटरैक्ट करना होगा। मैनेज बीस्ट इनको लेना होगा। रुक जा दोस्त, तू अंदर क्यों जा रहा है? रेडी Settle yourself. I mean you no harm. इतना ही था क्या? बाकी देखेंगे बाद में। देखते हैं, कुछ तो सीन होगा भाई, मुझे तो इतना पता नहीं है। देखना है बस। कुछ जब भैया जी आओ रे। I'll look after you. चल भाई, अच्छा यहाँ से मिल सकता है।
मुझे नहीं पता था कि वहां से भी मिल सकता है, यू नो। कभी कभी बड़ी अलग ही सीन चल रहा है इनका। ये वाला तो शायद और कितना टाइम लगेगा वैसे देखते हैं। हाँ 21 में हो जाएगा, मतलब कल तक तो हो ही जाएगा। और एक सेकंड वाला कहाँ है? और इसका देखते हैं अभी। मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी कर दे। इसका कितना टाइम लगेगा? 29 मिनट। ओके ठीक है चलो। और मेरे पास और भी मूनस्टोन्स है वैसे, तो शायद हम लोग और एक बना सकते हैं। ट्राई करें। अच्छा यहाँ पर भी मूनस्टोन्स है, सही है। बहुत बढ़िया, मुझे यही चाहिए था वैसे। वैसे कितने चाहिए? और अगर मैं और एक ये सब नहीं चाहिए, यही चाहिए। और एक अगर मैं बना भी दूँ, और मुझे और कुछ, मुझे और 4 मूल तो मिले। और कितने हैं यहाँ पे? मिलेगा क्या मूनस्टोन्स? उधर तो मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता और मूनस्टोन यहाँ पर मिलने वाले हैं वैसे। ये क्या है भाई? नहीं चाहिए मुझे, और कुछ मूनस्टोन्स चाहिए। ओके मिल गया। तीन मिल गया, चलो वेरी नाइस। चल दोस्त, और एक चाहिए मेरे को, अभी बनाते हैं। ठीक है चलो, और एक यहाँ पे बना देते हैं थोड़े साइड करके, यहाँ इस पास में। चलो और हाँ ये रहा। थोड़ा सा इधर करके अगर बना दें, नाइस। चलो बाद में देखेंगे ये सब। तू क्यों अंदर जा रहा है? तेरे को क्या है प्रॉब्लम? बाहर निकल। अच्छा ये रेडी हो भी चुका है? रेडी, अच्छा। अभी तो इन दोनों ही बचे हैं, अभी इनको लेते हैं, इसको लेते हैं। चलो अभी के लिए इनको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है? तो क्योंकि इनका तो अभी काम ही थोड़ा हो चुका है। बहुत बड़ा जगह है, बहुत लोगों का होगा। अच्छा तुम लोगों को मैं बता दूं, जो अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो मेन चैनल पे मेन स्ट्रीम चल रहा है, वहाँ पे जाओ। शॉर्ट पे जो लोग हैं मेन स्ट्रीम पे जाओ, तो तुमको ज़्यादा अच्छा 2K में मिल जाएगा। लोग बहुत अच्छा मिलेगा। और हम लोगों को कुछ भी बनाने हैं वैसे, ये तो इसका मुझे चाहिए। मैक्सिमा बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम मैंने बहुत हेल्प मिला था मेरे को। और फोकस वाला पोर्शन तो अभी मेरे पास मैं बना नहीं सकता क्योंकि वो टाइम लगा। अभी के लिए हम लोग ये छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो अभी और बाकी चीज़ों के लिए फोकस करते हैं। हम लोगों का हो चुका है और अभी चलते हैं। बहुत फालतू चीज़ें भी आ चुके हैं हम लोगों के पास, यू नो कि
स्टेप रीडिंग पे ये तो हो चुका है, ये तो और भी यूज करना बोल रहा है। चलो ये तो हो गया, अभी देखते हैं वो टाइम जब तक खत्म नहीं होने वाला तब तक फिर क्या है। मैं क्यों आया यहाँ पे, मैं छोड़ो अभी नहीं आना। वैसे पता है वहाँ पे फाइट लेने का सीन था। एक चीज मुझे चेक करना है गाइस, रुको रुक जाओ। हाँ सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है, ओके सुपर। अभी हम लोग सेबेस्टियन के पास जाएंगे, वहाँ पे कुछ बाकी चल रहा है। वैसे ये पॉपी के पास भी बाद में देखेंगे, अभी के लिए यहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे। जो नए नए हो जल्दी से लाइक करो यार, ब्रीडिंग करना सीख गए हम लोग, वो भी जानवरों का। कर मिलना चाहिए हम लोगों को। पानी पी रहा था। चलो चलते हैं, अभी कहाँ जाने को बोले हैं। Someone was sat by the fire in our common. हाँ अभी यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग। रुको भाई, रुको भाई, तुम लोग 5 मिनट। फिर से चलते हैं। ओके हम लोगों को शायद फिर से I can't believe we found ourselves trapped. स्लिथरिन हाउस के सामने ही जाना होगा शायद, या फिर हाँ ये तो यहाँ ही बुलाएगा। कुछ नया सीखने को मिल रहा है। You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. अच्छा जी। Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. देखते हैं। I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanted it. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne.
You don't know when to Confringo! stop. I know when not to stop. Bombard Leave me alone. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Protego! तो होने वाला है. चलो बात तो हो गया उनसे. कुछ और करते हैं अभी. देखते हैं. ये तो हो ही रहा है तो नया वाला करके आता है. चलो. वैसे पॉपी का भी कुछ सीन है. चलो देख के आता हूँ. बहुत दूर तक भाई वो तो दूर से बैठी है. चलो जाना तो होगा ही हम लोगों को. वैसे ये तो हम ले नहीं सकते. के लिए वैसे हम वो नहीं ले सकते शायद कि वो ब्रीडिंग चल रहा है तो 23 मिनट तक तो हम नहीं ले सकते हैं. चल क्या देखना है बात. तो चलो लगता है मुझे कुछ फाइट वाइट होने वाला है. लगता है फाइट तो होगा ही. वैसे पता नहीं कब हम लोग यार ये ब्लूम का मतलब स्पीड रेस करेंगे फिर से. टाइम ट्रायल कब स्टार्ट होगा मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे इसका स्पीड भी बढ़ाना है. अभी लेवल 1 पे चल रहा है. पहुंच गया मुझे. बहुत स्लो चल रहा है मुझे पता है. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. All right. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did.
I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Hauntel Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. जाओ थोड़ा ये लगा देते हैं और ये अच्छा है वैसे मैं एक बार ये ट्राई करना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ रखूँगा और इसको मैं रख ही देते हैं यहाँ पे ठीक है चलो चलते हैं A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. शॉर्ट से देख रहे हो तो मेन स्ट्रीम पे जाओ तुम लोग लैंडस्केप पे बहुत अच्छा व्यू मिलेगा तुम और ज्यादा अच्छा डिटेल व्यू मिलेगा तो तुम्हें जॉइन करो He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. कुछ तो होगा यहाँ पे देखने दो मेरे को That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Revelio! This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Pelt. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. यार आलतू फालतू चीजों से इतना बड़ा हो चुका है ना भाई कि मतलब जो अच्छा चीज है वो मैं यूज ही नहीं कर ओ ये तो मजेदार है भाई ये सही है ये इंडियन टच है नहीं नहीं इसको नहीं जाने देंगे अभी के लिए इसको जाने देते हैं अभी फालतू की चीज़ों को हम लोग हटाने वाले हैं अभी तो पहन सकते हैं क्या फालतू चीज़ों को हटा देते हैं रुको नहीं तो बहुत जगह ले रहा है ठीक है अभी ठीक है Revelio! इसका जाएगा इस साइड से जाना होगा शायद
is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. कुछ ना कुछ तो सीन चल ही रहा है यहाँ पे, तो ये लेके कोई फायदा नहीं है। Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Why wouldn't they take their cages with them when they left? How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. मेरे पास हील बहुत कम है और मुझे गाइस पता भी नहीं है, ठीक है, कि क्या सीन होगा कि नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा देख के ही जाना होगा हम लोगों को। If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank. Irondale's not half as tough as it sounds. Someone messing about. Than you. Good freak. Accio. Bombada. Confringo. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. Revelio. What is going on here? Only one way to find out. हाँ नैटी से तो अच्छा ही खेली है। नैटी से तो भाई अच्छा ही किया इसने, नहीं तो लास्ट टाइम नैटी ने जो किया था भाई उससे तो अच्छा ही था ये। ओए ये कौन सा ड्रैगन का सिर है बे? What in Merlin's name? Are those dragons? ड्रैगन फाइट हो रहा है भाई, क्यों करवा रहे हैं? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. That's it. I
Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Focus, Totalis. यार इतना क्या है मेरे पास बे गियर्स में साला जो भी लेने जा रहा हूँ साला कुछ ना कुछ गांडूगिरी चल रहा है भाई अलग से ही इतना क्या फुल हो चुका है मेरा अच्छा जी रखते हैं उसको फालतू चीजों में Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say... It's Totalis. Revelio. That's a brilliant idea. Revelio. Anyone looking for troubles found it in me. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Look, they've got a Revelio. dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamora. मुझे लगता है ड्रैगन के लिए भी जगह बनाना पड़ेगा All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. One foot in front of the next. Careful! Ramrock will want his dragon in hand!
You're the one we're looking for, and you brought a friend. I'll check your pockets after you. Stop right there. Make box of you. Back to the door. Feisty little. You got normals these days? Like to watch a dragon! Vegetables and let's play! Shall we finish what we started? That's mine! We don't have time. We need to free her now before more show up. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. This way. इसका तो एक लाइक बनता है भाई। फाइट तो क्रेजी था, ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को यार। That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know.
Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. चलो सही है आ जाइयो चलो शायद हम लोगों का ब्रीडिंग भी कंप्लीट हो चुका है या कुछ चेक करना है सही है It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. सही है ऐसे मानो या ना मानो फाइट अच्छा है ये तो बोलना होगा तुम लोगों को जो भी देख रहे हो Revelio. तो ये नाइट का क्या साइन है अभी चलो तो चल के देखते हैं Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. हाँ ये तो वही है अच्छा भाई सही है वे और एक मिल गया हम लोग बहुत ही क्रेजी चीज था वो मानना पड़ेगा वाला देख लेते हैं क्या करना है हम लोगों को ये भाई इतने सारे असाइनमेंट्स भाई अंडरग्राउंड हार्बर कलेक्टर कहाँ से लाएं ग्रूम फीट एक बार जाना होगा हम लोगों को रुको मैप खोल लेते हैं डायरेक्ट ही चले जाएंगे इतना कौन बोलेगा चलो आ चुके हैं एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग बड़ी होगा शायद कैसे हो दोस्त ये छोटू सा बच्चा ये देखो ये है तो फिर अच्छा ये है भाई चलो भाई इसका नाम रखते हैं चलो भाई हम लोग चिंटू को जन्म दे चुके हैं तो चिंटू नाम रखते हैं सही है भाई बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है चल बेटा तू भी कुछ खा ले बाकी लोग कहाँ हैं? मेल वाला है
should let Deke know about the newborn Thestral. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. डीक के साथ बात कर लेते हैं. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. पावर थोड़ा अपग्रेड करना होगा. अभी भी टाइम लगेगा. देखते हैं. बाकी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं. चलो. इसकी मम्मी से बात करना होगा. और ये कल करेंगे, ठीक है? ये वाला प्रोफेसर वाला कल करेंगे. आज ये वाला देखते हैं. ये दो बाकी है, ये दो करते हैं. चलो. नाटी के नाटे से मिलता है अभी. कितना दूर जाना होगा वैसे? अभी कितना दूर जाना होगा वैसे? काम करेंगे गाइस कल ना. कल वैसे होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं. हम लोग नेक्स्ट मंडे जब स्ट्रीम पे आएंगे ना, तो हम लोग बाकी जो एस्ट्रोनॉमी क्लास का टास्क है वो कंप्लीट करने वाले हैं. मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों को अभी भी टेलीस्कोप लगाने की वो जगहें हम लोगों को ढूंढनी होगी. तो मैं सोच रहा हूँ कि मंडे को कर लेते हैं.
So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. चलो सही है एक काम तो हो गया चलो अभी दूसरे पे चलते हैं अभी शायद हम लोग ड्रैगन वाले के पास हैं कॉफी के पास देखते हैं ड्रैगन का क्या सीन है चलो चलते हैं ऐसे जा सकते हैं ना इस 600 मीटर का 600 मीटर दिखा रहा था तो तभी तो उड़ के चले जा सकते हैं तभी उड़ के चले जा सकते थे यार लोग नहीं कर Across one's duty. Impressive flying for a relative. एक तो साले हॉग्समीड पे बुलाते हैं और हॉग्समीड पे भाई घुसने ही नहीं देते यार झाड़ू लेके
Hogwarts आ गया क्या? पेड़ बहुत ज़्यादा घना हो चुका है। Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. चलो ये वाला भी हो गया। अभी करते हैं, ये वाला ही करना होगा फिर हमको। यहाँ पे क्या है? देख के आते हैं। What will I do without her? Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. What do we have here? A demiguise. Revelio.
abandoned long ago, no doubt. Poachers? Garniff was right then. I'd better be careful. Where's that goblin helm, you little thief? Likely a little beastie on the roam. When he wasn't looking at... Trafficus totalis. Incendio! Real quick, don't... Accio! Endo! Bombarda! Careful not to get bit. Arrest the movement. Footing soon, my friend, and I shall be waiting. You've escaped this time, coward! But my talons await. Be sure of it! Is that you, Royland? Accio! Confringo! Redacta! Crucio! Defendo! Redacta! Accio! Bombarda! Think I won't remember your face? Accio! Confringo! Crucio! Bombarda! Accio! Confringo! Rookwoods don't go down easy! Accio! Confringo! Bombarda! Crucio! Regret that, I promise you! Revelio. Good riddance. Accio. Confringo. Crucio. Bombarda. We're in prey, shall we? Accio. Confringo. Think you can sneak away from under Defendo. Arresto momentum. Confringo. Crucio. Bombarda.
Revelio. Alohomora. चलो Which one of you is Biscuit? Revelio. Feels like I've been at this for hours. कौन सा वाला है? खोल तो दिया हम लोगों ने. Revelio. ढूंढना है वो कहाँ है. All right, Biscuit. Let's get you back to Garliff, shall we? Accio. Bombarda. Confringo. Arrest them in the second. Bombarda. Crucio. Confringo. लेके आ गए हम लोग. ओके, यहाँ पर भी एक है. सही है. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. देखो, यहाँ पर भी एक है.
ये भाई ये जगह मार्क करके रखना है मेरे को। कैसे करें, एक बार चेक कर लेते हैं मैप में ये कहाँ पर है, कहाँ पर। हाँ तो ओके, तो यहाँ पर है ये हॉक्समीड से कुछ ही दूर, ठीक है। आज ओके, तो ये करने के बाद हम लोग आएंगे, या फिर अभी कर लेते हैं ना। मेरे पास एक आइडिया, रुको। हम थोड़े अगर मैप खोल के वेट कर ले तो शायद हो सकता है। चेक करते हैं। Knowing a meat, he's likely studied here. हो गया। अभी गाइस देखना, जो देख रहे हो तो देखना, बहुत ही क्रेजी चीज है। सही है ना, सही है भाई। पूरा मतलब ज़ोडिएक साइन को पूरा करवा रहा है। चलो मेन चीज़ पे फोकस करते हैं। क्या कर रहे? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. ये कौन है? आएंगे, रुको ये देख के आते हैं। Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. चलो I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. चलो यार, सामने मैंने कुछ देखा था, एक बार उसके पास चलो। साइड को ही मैंने देखा था ना। Pardon me? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Sure. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Booba-Tuba pus. Booba-Tubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I will try find some for you. What Booba-Tuba? What precisely are Booba-Tubas? Disgusting things, really, covered in protrusions.
One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few booba-tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Into the Forbidden Forest for booba-tubers. I hope it's worth the risk. नहीं और मस्ती नहीं करेंगे अभी ढूंढने जाएंगे बूबा बहन ने क्या नाम बताया बूबा चलो भाई बूबा सॉरी टूबा कुछ तो हुबा They know the lies and falsehoods no one hides. यहाँ से बूबा लाने सॉरी बूबा दूबा लाने के लिए थोड़ा ज्यादा घना जंगल This is where Saccharissa said to go. Now where are those booba-tubers? चलो देखते हैं Petrificus totalis. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Oh, booba, booba. भाई बोलने में भी मजा आ रहा है यार Revelio. अभी शायद मेरे को और 3 चाहिए Just my luck, a troll.
चाहिए मेरे को। नहीं जाने वाला भाई, लास्ट मिला था इसमें। Bombarda! Bombarda! Confringo! Bombarda! Confringo! Bombarda! Accio! Confringo! Crucio! Bombarda! Accio! Confringo! Confringo! Bombarda! Accio! Confringo! Bombarda! Accio! Crucio! Accio! Bombarda! Confringo! Bombarda! Confringo! Defendo! Bombarda! Accio! Confringo! Crucio! Bombarda! Defendo! Confringo! Crucio! Bombarda! Confringo! Defendo!
Revelio. यहाँ तो है नहीं। Defender. Revelio. आजा आजा आजा। Ringo! Incendio! Protego! Revelio. Incendio! What have you done? That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. मेरे को मिल गया मेरा काम का चीज, अभी मैं भागने वाला हूँ। पोबा लेने गया तो भाई पोबा। ओ हाँ Saccharissa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना। Yes, but for high price. पैसा ले लें इनसे। It actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. भाई लड़कियां भाई पैसे लिया तो भाई अच्छा जी कमाना कमाना पड़ता है यार। शौक देंगे नहीं तो जल्दी जाओ यहाँ पर। गांड में शौक देंगे हमारे। चलो ये वाला भी हो गया, अभी देखते हैं हम लोगों का मेन क्या बचा है। अभी असाइनमेंट बच्चा तो है लेकिन यार करे क्या करें नहीं करें। चलो यार देखते हैं। कलेक्ट फुल पेज अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। चलो कड़ी लेते हैं, जब बैठे ही हैं तो कड़ी लेते हैं। कितना टाइम कितना हुआ वैसे? ओके अभी सिर्फ 12 बजे हैं, 1 बजे तक हम लोग हैं, फिर हम लोग बंद करने वाले हैं। ओके गाइस चलो अभी के लिए चलो, फिर मैं बंद करने वाला हूँ। वैसे बहुत दूर जाना होगा हम लोगों को, देख लो वर्ल्ड मैप खोलना ही होगा। हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी, हम लोगों को लाइब्रेरी एनेक्स के साथ लाइब्रेरी जाना होगा। नहीं यार मतलब इतना घूम के कौन जाएगा यार, तुम लोग बताओ। अभी जाना होगा फिर से, ये भाई ऊपर से एक रूम में घुसने नहीं देते, अलग बकचोदी। तुम लोगों को नीचे जाना होगा शायद से। वैसे तुम लोगों को पता होगा कि कुछ जगह पे हम लोगों को घुसने नहीं देते। पहले शायद हम लोग ऊपर वाले सेक्टर से कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन चलो देखते हैं। पता है यार ये वाला लाइट जलता क्यों नहीं? कभी-कभी कुछ चीजें जलवाना पड़ता है। ये देख रहे हो ये वाले लाइट जल ही नहीं रहा।
Confringo! चलो देखते हैं इस बार भी क्या कोई फाइट होने वाला है क्या? वैसे ये मेरा एक सब्सक्राइबर जो अभी अभी आया है वो उसको भाई नाम क्यों नहीं दिया मुझे ये पता लगाना है। So this is the underground harbor. अच्छा जी। Revelio. अबे यार अबे मैं तंग आ चुका हूँ भाई। एक तो फालतू के चीजें मिलते रहते हैं इसको डिस्ट्रॉय करो यार ये नहीं चाहिए। बहुत फालतू फालतू की चीजें मिल रहा है आजकल। 3-4 ग्रिफिंडोर का भाई अलग ही निकल गया। ये रहने देते हैं ये और ये अच्छा लग रहा है वैसे। ये भी सही है। 95 है ये 105 है 84 है। इसको अभी हटा देते हैं ये नहीं चाहिए वैसे। वैसे ये अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। ये रहने दो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। फिर से एक फालतू चीज। Revelio. तो और कुछ नहीं मिलने वाला। ये क्या है? वाह मतलब अलग ही दुनिया में जी रहे हैं हम। ओह आजाओ आजाओ आजाओ। सही है मिल गया हम लोगों को यहाँ पे काम जो करना था शायद मिल गया। करना क्या था वैसे यहाँ पे पता नहीं यार। हम लोग तो यार कलेक्ट करके चले गए। सिर्फ घूम के ही आना था क्या? फिर से आग बंद हो गया। Confringo! एक चीज़ बहुत अच्छा है भाई ये जो वी दबा के जो मार्क हो जाता है ना वो बहुत क्रेजी लगता है। मतलब तुम फिर ट्रैवल करो वो बहुत ही मज़ा आता है इस चीज़ में। देख रहे हो हम लोगों को कहाँ जाना है कहाँ क्या करना है पूरा मतलब अलग ही कर दिया इन्होंने। बहुत ही क्रेजी चीज़। लाइक अ रिबन पूरा रिबन जैसा हो गया है। That book Professor Weasley asked me. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch?
ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल बना दिया इन्होंने। ओके, फिर क्या होगा सोचने दो यार। ये मुझे देखो भाई, लक के भरोसे करे। तुम लोग क्या बोलते हो, कौन सा आंसर होने वाला है? अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आउट है। जय माता दी। इसको कर दे, कर देते हैं, इसको ही करते हैं। The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organised competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Founders, Hogwarts, Dead Hallows. I think Dead Hallows. मुझे जितना पता है Dead Hallows ही होगा। ये वाला तो मुझे पता है। The Deathly Hallows. Correct! According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Bulger, I think ये कौन सा वाला होना चाहिए था? Last time तो मुझे इसका आंसर होगा शायद, भाई याद नहीं आ रहा मुझे, मेरे मतलब पेट पे आ रहा है, मुंह पे नहीं आ रहा है यार, क्या मतलब। कौन सा वाला यार, बताओ यार, तुम लोग तो बताओ। I think The Quaffle. That's right! When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Okay, ये भी थोड़ा restriction है। I think yes होगा या no होगा? तुम लोग क्या बोलते हो? I think false. अक्कर बक्कर करे फिर से। False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. No, thank and I you. won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I don't like more. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio! Want to test your knowledge on some more difficult questions? No. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. मैंने बोला ना, ये बहुत ही क्रेजी चीज है। वैसे अभी मैं इतना क्यों भाग रहा हूँ यार, मेरा तो काम हो गया। अभी चलो जल्दी से
Okay. The unfairness of being hung here, why it warrants looking into. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What? I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Beautiful. Goodness. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. चलो करके देखते हैं We'll be here before you know it. ये कौन है हरिपुत्र? It warms my heart to see your interest in her. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Glad to see you were paying close attention to my demonstration. इंसान को बदल सकते हैं क्या? पता है. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there.
and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Guys, वैसे ओके गाइस आज के लिए नहीं करने वाले हैं तो जो देख रहे हो अभी तक भाई जल्दी से लाइक करो सब्सक्राइब करो और मैं मिलूँगा कल या दूसरे किसी दिन तब तक के लिए बाय बाय Wanna pretend now we know it all. We wanna pretend now.